समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भणी मैंने आपण निहाती थंबनेल देखिए वीडियो को आसी थंबनेल रे जहाँ भी लिखाई से विषय नहीं कि आम आलोचना करवा किसी अलग विषय आम आलोचना करवा नहीं। तेरे प्रिय बंधुगण बड़ दिन आसवा पूर्वर बा आपण कहींपारे ख्रीଷ୍ଟମାସ आसवा पूर्वर विरोधी माने नुआ नुआ प्लान सब करते। सेमानकर प्लान अनुसार सेमाने एमिति प्लान करती आउ सेमाने भावती आमे कौन करिबो प्रभु जीशुख्रीष्टर जो जन्मदिन को ख्रीस्टियन लोक माने पालन करुचंते ताको आमे कले बले कौशले आमे माने बंद करिबो ताको आमे अटकेइबो आ सेथि पई सेमाने विभिन्न प्रकार रणनीति सब आपने थांती। तेबे प्रिय बंधुगण आपण जानिथिबे ख्रीस्टियन विरोधी मानक भितरे कौ कौ दल सब आमर भारत वर्षार कार्य करते जमती कि आरएसएस है, बजरंग है, शिवसेना है आउ ए सब दल गुड़ी को सपोर्ट करुच्ची किए बीजेपी सरकार सपोर्ट करुच्ची। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भणी माने बड़ दिन आसिया पूर्वर आरएसएस एक चेतावनी देइचंते। एई चेतावनीटी चेतावनी भलिया जना पड़ुनी किंतु एटा मध्य गोटे चेतावनी आउ एटा होची आमर ख्रीस्टियन समाज प्रति चेतावनी। ता सहित जो आमर हिंदू भाई भणी माने सेमाने ख्रीଷ୍ଟମାସ मध्य सेमाने निज घर को सजाते आ विभिन्न विभिन्न प्रकार सेमाने सजाते आउ सेमानक निमंते सेमानकर मेसेज रही अच्छे। आउ सेमानकर मेसेज कौन जे ख्रीस्टियन लोक माने धर्म परिवर्तन करुचंती आ तुमे घर को तुमे सजाओनी आउ ख्रीଷ୍ଟମାସ तुमे पालन करनी। विशेषकर आमर हिंदू भाई भणी माने पिठापना करनी जदि करिवो तेबे तुमे ख्रीस्टियन हो जिवो। जय श्री राम। आज विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत ने हिंदू समाज के नाम एक अपील जारी की है जिसमें हमने कहा है कि अभी आने वाले दिनों में जगह जगह हिंदू स्कूलों में या हिंदू दुकानों पर या हिंदू जहाँ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ऐसे मॉल में हैप्पी क्रिसमस के बोर्ड लटकाए जाएंगे और दुकानें या मॉल सजाए जाएंगे या स्कूलों में गतिविधियां हों। तो हमने समाज से अपील की है कि ऐसी सभी गतिविधियों से समाज को बचना चाहिए, समाज को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से जो ईसाई मिशनरीज हैं उनको हिंदू समाज का धर्मांतरण कराने में सुविधा होती है। तो अपने धर्म की रक्षा करना ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए ऐसे सभी स्थानों से जहां भी इस प्रकार की गतिविधियां हम देखते हैं तो उनको भी सचेत करें और स्वयं भी ऐसी गतिविधियों से दूर रहें, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें। नहीं तो जिस प्रकार से धीरे धीरे बहुत बड़े एक पैमाने पर धर्मांतरण की गतिविधियां इस समय काल में बढ़ जाती हैं, उन सब से देश को, धर्म को, समाज को बचाने के लिए 22 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक विश्व हिंदू परिषद धर्म रक्षा सप्ताह अभियान चलाने वाला है। ऐसे सब दुकानदारों के पास भी जाकर के हम उनसे नम्र प्रार्थना करेंगे कि वो इस प्रकार से अपनी दुकानों को न सजाएं और अपने केवल एक बिक्री बढ़ाने के लिए और धर्म की हानि ना करें। हम जो स्कूल हैं उनके प्रधानाचार्य को भी पत्र लिखने वाले हैं और जो मॉल हैं उनके प्रबंधन को भी पत्र लिखने वाले हैं। आप सबसे भी मेरा यह आग्रह है कि कृपया विश्व हिंदू परिषद के इस अभियान में आप हम सबको सहयोग करें। धन्यवाद। जय श्री। माने एमानकर कथा होचे एमिति माने आरएसएस बा आपण कहि परिबे विश्व हिंदू परिषदर लोक माने वर्तमान गोटे गोटे वीडियो तैयारी करिकि इंटरनेट रे छाडुचंती गोटे पर गोटे आ जो द्वारा माने सेई वीडियो माध्यम रे से माने कहिया बे चाहते तुमे जदि निज घर को माने ख्रीଷ୍ଟମାସ रे सजैब माने लाइट जब ख्रीस्टियन माने जमती लाइट सजाती जमती फूल एमती देगी सजाती टेंट पेंट करती से जहाँ भी हो जदि हिंदू भाई भणी माने विशेष करके बड़ दिन में से घर को जदि सजेबे से ख्रीस्टियन होइजिबे माने एमानकर चिंताधारा को टिके देखंतु प्रिय बंधुगण घर को सजेले जने ख्रीस्टियन होइजिबो। जदि कौन सी हिंदू भाई भौणी डिसेम्बर 25 तारिख दिन पिठापणा करुच्ची
ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବି ଏମିତି ମାନସିକ ରୋଗୀମାନେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ନେଇକି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ନେଇକି ଏମିତି ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ଯେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ପାଳନ କରୁଛ, ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କୁଆଡ଼େ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, କାହାର ଏତିକି ଦମ୍ ନାହିଁ, କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀର ଏତିକି ଦମ୍ ନାହିଁ ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇଦେବ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି। କାହା ପଛରେ ସେତିକି ଦମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ RSS ହେଲା, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ହେଲା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମାନେ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଚୂଡ଼ା ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏମିତି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ଟିକେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖା, ତ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦମ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇବେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ସେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଏମାନେ ଲଗାଉଥିବେ, ଆଜି ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଥିଲି, ପ୍ରମାଣ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଯାହାକି ପୁରା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ। ଏମିତି ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଚଳିବନି। ଯେମିତି ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ଯଦି ତୋର ଦମ୍ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି। ସେ ଡିଲରରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ତାର କେତେ ଫଟୋ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ମାନେ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେଉଥିବ ଏବଂ କହୁଥିବ ನೇರ ଭାଇ ଚାଉଳ ନେଇଯା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯା। ଜଣେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବ, କହୁଥିବ ଯେ ଏ ଟଙ୍କା ନେଇଯା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯା। ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇଥିବ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଆଉ ତାର ସ୍ଲିପ୍ ତ ଥିବ, ତାର ପ୍ରମାଣ ତ ଥିବ ତୁମ ପାଖରେ। ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନ ଥାଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଚାଉଳ ଦେଇକି। ଆଉ ଯେମିତି ଆମର କୁକୁର ତପି ମିଶ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି, ତା ନାଁ କ'ଣ, ନାଲି ଗାମୁଛା, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରୋପ ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, RSSର ମେସେଜ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ମେସେଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଏମିତି କର ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଳନ କରୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଅଟକେଇବ କହିକି? କିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା? କିଏ ତୁମକୁ ଦେଲା? ତୁମକୁ ଅଥରିଟି, ଅଧିକାର ତୁମକୁ କିଏ ଦେଲା? କେହି ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ବିଚାର ନିହାତି କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।